Hello, parents. Are you one of those parents who get irritated when you see a child being completely hooked onto the phone? Then it is important for you to know first thing, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से सोशल मीडिया के साथ या वीडियो गेम्स के साथ आपका बच्चा इतना अडिक्टेड फील करता है? सेकेंड थिंग, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स टू आइडेंटिफाई कि आपका बच्चा सोशल मीडिया से अडिक्ट हो चुका है? एंड थर्ड थिंग, how do you talk to your child, especially teenagers, about this social media addiction in a friendly yet effective way? Parents, today we have with us psychologist Mr. Swapnil Pange. Swapnil sir is a practicing psychologist since past 14 years, and he is currently heading an organization called Responsible Netism. रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटलाइजेशन से जुड़े प्रॉब्लम्स को लेकर मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग प्रोवाइड करता है. हेलो स्वप्निल सर, वेलकम टू जेन एक्स पेरेंटिंग. हेलो लीना, हेलो पेरेंट्स. सो सबसे पहला सवाल, अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, ओके, तो जब रेडियो इन्वेंट हुआ था इट वाज कर्स्ड. टीवी को भी हमने हमेशा इडियट बॉक्स करके ही रेफर किया है. इवन इंटरनेट को मायाजाल कहा जाता है. सो इसका मतलब है हर नई चीज का प्रोटेस्ट कभी ना कभी जरूर हुआ है. सो शायद सोशल मीडिया के बारे में भी यही सच है. Then why do you think social media is so dangerous for today's generation? So this is very interesting questions. Firstly, let's accept the fact that human mind is bound to get distracted, and experiments have proved that we get distracted very easily. But in case of social media, it is so worst, and there are some reasons. उसके कुछ reasons है. सबसे पहला रीजन ये है कि लेवल ऑफ एंगेजमेंट. तो सोशल मीडिया इस तरीके से बनाया गया है कि आपका लेवल ऑफ एंगेजमेंट हमेशा के लिए बहुत इंटेंस तरीके से रहे. सो फॉर एग्जांपल, आप कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर आप मतलब बुक पढ़ते वक्त या फिर मूवी देखते वक्त कोई आपको बुलाता है. सो आप वो उस दिशा की तरफ देखते हो और रिस्पॉन्ड करते हैं. नाउ सेम सिचुएशन, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और वो स्क्रोलिंग करते हुए कोई आपको पुकार रहा है, समवन कॉल्स यू, यू नो, आप रिस्पॉन्ड करते हो लेकिन योर आईज आर स्टिल ग्लूड टू द इंटरनेट. एंड दिस इज द हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज वर्स बिकॉज बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. तो लेवल ऑफ एंगेजमेंट इज हाई. सेकेंड रीजन इज notification, the constant notifications that we get. So what happens, for example, we are reading a book, हम लोग बुक देख रहे हैं, बुक खत्म हो जाता है. टीवी सीरियल देख रहे हैं, वो खत्म हो जाता है. लेकिन हम जब सोशल मीडिया पे होते हैं तब वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि वी आर कॉन्स्टेंटली हुक्ड ऑन इट, और उसके लिए हमें वो नोटिफिकेशन कॉन्स्टेंटली आ जाता है. एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी डेंजरस, विच इज वेरी रिस्की. एंड बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं लेकिन वो नोटिफिकेशन आने के बाद वी आर मोर क्यूरियस टू सी व्हाट इज देयर. तो नोटिफिकेशन इज वन अदर डिस्ट्रैक्शन दैट वी हैव. So because of this, it's very difficult to switch off. There is no switch off button. WhatsApp पे log out button नहीं है. Once you log out, you permanently logged out. There is nothing temporarily, and they have been designed in such a smarter way that you cannot get rid of it. Again, research, there are many research. इस एरिया में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जो हमें बताते हैं कि सोशल मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ड्रग होता है, कोकेन होता है या फिर कोई अदर ड्रग होता है, वो हमारे ब्रेन पे जैसे इफेक्ट लाता है वही इफेक्ट सोशल मीडिया एंगेजमेंट से भी आ सकता है. सो एज सिंपल एज दैट, वी हैव विड्रॉल सिम्टम्स. Suppose someone is consuming or abusing cocaine and the person is showing abstinence from cocaine. The same time person is likely to show some withdrawal effects.
Similar withdrawal effects are also seen when people are away from internet, people are away from social media, and that is very risky. That is very dangerous. Uh, Another important point or factor why we think that social media is dangerous, because there is lack of control on the quality. There is no, for example, censorship. What we see in social media, there is no filter to it. Kids are exposed to very violent, abusive sexual material through memes, through reels, through short videos. That's why, that is another important factor over here. And another important factor which I think is uh, easy access. So, for example, younger children, they're exposed to YouTube. There are songs, there are animations, there are cartoons, and at a very young age, they are getting exposed to the screen. They have been used by parents for entertainment, for educational purpose, but gradually from use, it leads to overuse, to abuse, and then addiction. So I think these are the important factors because of which I think social media has become quite dangerous. So, sir, now all of us are on social media. So it is morally incorrect to stop children कि तुम वहां पे मत जाओ लेकिन मैं वहां पे हूँ. Then in that case, what are the preventive steps that parents should be aware about so that they can subtly protect their children? Okay, so here I would like to ask all the parents who are watching this video, I would like to ask them, what is the age limit for using WhatsApp, Instagram, Facebook? Do you know? Is there any age limit? If yes, then do you know what is the age limit? Okay, let me Google that now because even I don't know. So, parents, this is an interesting question, and I have just Googled it and got to know the age limit. If you have Googled it after this question by Swapnil sir, then do share it in the comments and be aware about it. A child has to be at least 13 years of age before they access WhatsApp. Facebook, 18 years. Though they are using adult apps, the brain is like a child. Brain is not able to take a judgment. What is right, what is wrong, what is risky, what is not risky. Everything is very fascinating for them. तो यहाँ पे बहुत सारे risks involved है. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेरेंट्स को कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. एक, यंगर चिल्ड्रन जो है, बच्चे मतलब प्री प्राइमरी, प्राइमरी, उन वो जो मोबाइल पे एक्सेस करने वाले जो भी चीजें हैं वो आपके मोबाइल से कर सकते हैं. यू नो नीड टू गिव देम सेपरेट मोबाइल और सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑन व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग. ओके, दैट इज वन थिंग. अभी बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि हम लोग बाहर रहते हैं, बिकॉज ऑफ वर्क वी आर वर्किंग, देर इज नो वन टू टेक केयर, वी नीड टू कम्युनिकेट. ऑफ कोर्स, आई मीन, बट देन देर आर सिंपल स्मार्ट, देर आर सिंपल phones are available, right? Second thing, so you need to monitor what your kids are doing. If they are if you are giving them WhatsApp or Facebook or Instagram. I know some of my clients जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को उनके मोबाइल पे इंस्टाग्राम अकाउंट उन्होंने ओपन करके दिया है, जिसको पासवर्ड नहीं डालते हैं. ये बच्चे जब भी उनको चाहिए, दे गिव सम, दे हैव लाइक डिसाइडेड सम टाइम फ्रेम कि लाइक 1 घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए आपको मोबाइल मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, वो आप यूज कर सकते हो, एंड देन द फोन इज गिवन बैक टू पेरेंट्स. So this is very important for younger kids. For older children, if you have to give them uh, mobile, social media, make sure that you follow the age limit. If they are using various apps, make sure that in their mobile there is no password for those apps, because adults should have some kind of supervision to what they are accessing. I know this is very controversial. People may not like it. Students or kids, if they're watching this video, they may not agree with it, but unfortunately, this is it. Uh, there are some cyber etiquettes. For example, जैसे हम पार्टी में जाते हैं, कुछ etiquettes होते हैं.
हम मीटिंग्स में जाते हैं, फॉर्मल फंक्शंस अटेंड करते हैं, तो कुछ एटिकेट्स होते हैं। सिमिलरली साइबर स्पेस में, साइबर वर्ल्ड के कुछ एटिकेट्स होते हैं, जिसको साइबर सेफ्टी, साइबर हाइजीन बोला जाता है। Important thing for all children, everyone for that matter, need to understand is that do not accept any unknown links on WhatsApp, or do not click on any such links which are very fishy. But for younger children, kids who are using social media or any other platform for entertainment, make sure that you're locking your profile. Second thing, आपको strangers से friend request accept नहीं करनी चाहिए. Usually क्या होता है, I'll tell you, I know person X, the person X is in my friend list. Now I have like someone has sent me request, the person's name is Y, and I go and see mutual friends. If Y does not have any mutual friends, do not accept that request unless and until you have met that person, you know this person. उनका request delete कर दो. Just because this person X is very good to you, nice to you, that doesn't mean that कि उनके mutual friends आपके लिए अच्छे हो. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोशल मीडिया की जो भी एक्टिविटीज है, स्पेशली यंगर चिल्ड्रन जो है, यंगर किड्स की, दैट एक्टिविटी शुड नॉट बी वेरी सीक्रेटिव. योर पेरेंट्स शुड नो अबाउट इट. एंड आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग पेरेंट्स कि हम ना न्यूज में बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, वेरियस इंसिडेंसेस जहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई किसी बच्चे को फंसा रहा है, किसी को स्टॉक कर रहा है, किसी को अब्यूज कर रहा है. यू नीड टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट्स टू योर चिल्ड्रन, because otherwise they will not understand the gravity of this situation. Very well said, sir. So that reminds me of the next question, that how do you know that your child is facing some problem through the social media, or your child is a social media addict? ये टाइटल हम कैसे दे सकते हैं, और अगर हमें ये बात पता चले तो हमें किससे मदद मांगनी चाहिए? So there are important signs and symptoms that everybody should understand to decide whether someone is getting addicted to screen, social media, or game. One is the constant preoccupation with the activity. Constantly दिमाग में वही सोचना. आप ऑफलाइन जाने के बाद भी आप ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में सोच रहे हो. सेकेंडली, आपकी स्लीप अफेक्ट हो रही है. रात भर बच्चे स्क्रीन से जुड़े हैं, वेरियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उनकी स्लीप अफेक्ट हो रही है. सेकेंडली, important life activities are being compromised. For example, studies, assignment submissions, attending social events. People or kids, they are missing all these things. Psychological consequences are there. Kids are getting irritable, moody, aggressive if their mobile is taken away. If they are told not to use screen, they get very aggressive. Sometimes they get very hyper. They may attack, on someone, the person who is causing the trouble. And lastly, very important, many times kids report that I know that I'm using it very excessively. I need to cut it down, down. I need to stop it, but somehow I just have lost this control over my use social media use. So अगर ये चार पांच चीजें आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, तो शायद उसको हेल्प की जरूरत है. At Responsible Netism, we provide this psychosocial, support for who are addicts or who are likely to get, affected by this online distress. So, sir, we discussed about the red flags, we discussed about the reasons, we discussed about what are the हम्म, alarming signs and symptoms. लेकिन जिस हम्म, एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, मोस्टली टीनेजर्स, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू टॉक. ओके, तो इनसे पेरेंट्स को किस तरह से बात करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस जनरेशन के बारे में? ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट एक है कि बच्चों को सोशल मीडिया, मोबाइल यूज करने दे, लेकिन अंडर सुपरविजन. Second important thing, having open conversation with your kids. Do not keep on interrogating every time. किसके साथ बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? Have an open communication with them, like a friend and not as an adult figure. Secondly, आपके दिमाग में जो भी concerns है about safety and other issues, tell them directly.
This is what you are fearful of. This is what you have seen, and let them understand the gravity of the situation. In case of, if अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा, maybe the child is falling in the range of problematic behavior, addictive behavior, then do not hesitate to seek from professional experts, psychologists, psychiatrists, counselors, so that आप शायद कुछ चीजें आप खुद से नहीं कर पाओगे, लेकिन आप प्रोफेशनल हेल्प तो जरूर ले सकोगे इन दिस केस. Thank you, Swapnil sir, for such a detailed session. Parents, सोशल मीडिया और उसके एडिक्शन के बारे में सही जानकारी, वक्त और मजबूत बॉन्डिंग आपको आपके बच्चों को सही गाइडेंस प्रोवाइड करने में मदद कर सकती है। जेनेक्स पेरेंटिंग का ये वीडियो इस दिशा में सिर्फ एक कदम है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जेनेक्स पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।